Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Awais. I teach Calculus 2 at Division of Science and Technology, Township Campus, Lahore. Today we shall learn about Fourier series. Our lecture contains Introduction of Fourier series. इसमें हम स्टडी करेंगे कि फोरियर सीरीज़ क्या होती है और किन फंक्शंस की हम फोरियर सीरीज़ कंप्यूट कर सकते हैं और फोरियर सीरीज़ कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे. देन वी शैल सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ फोरियर सीरीज़ एंड इन द एंड there are some practice questions. You have to solve them for better understanding. First of all, I will explain some important points related to Fourier series. First one is introduced by Joseph Fourier. This method approximates functions with sums of sine and cosine functions. फोरियर ने ऑब्ज़र्व किया था कि हम कुछ फंक्शंस को साइन और कोसाइन फंक्शंस के सम के तौर पर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. हम अपने एग्जांपल में देखेंगे कि हम फोरियर सीरीज़ को कंप्यूट करने के लिए उस फंक्शन को साइन और कोसाइन फंक्शंस के सम्स के तौर पर अप्रॉक्सीमेट करेंगे. The next one is Fourier series can be used to represent some functions that cannot be represented by Taylor series. This method often gives good approximations on wide intervals and often works with discontinuous function. फोरियर सीरीज़ हम उस फंक्शन की फाइंड करते हैं जिसकी हम टेलर सीरीज़ इजीली कंप्यूट नहीं कर सकते या उन फंक्शंस की टेलर सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. हमने देखा पिछले टॉपिक में टेलर सीरीज़ में कि टेलर सीरीज़ हम एक पॉइंट पर फाइंड करते थे बट द एरर इन द अप्रॉक्सीमेशन कैन बी लार्ज एट पॉइंट्स दैट आर फॉर अवे. सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि टेलर सीरीज़ एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन की हम फाइंड करते थे लेकिन फोरियर सीरीज़ हम डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस की भी फाइंड कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ वेल सूटेड फॉर एनालाइजिंग पीरियोडिक फंक्शंस. हम देखेंगे कि हमने जिसकी फोरियर सीरीज़ फाइंड की है वो एक पीरियोडिक फंक्शन के तौर पर हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं. इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स सच एज radio signals, alternating currents, for solving heat transfer problems, and for many other problems in science and engineering. Now we are going to study the formula of Fourier series which help us to compute Fourier series of different functions. The Fourier series of a function f of x is fk of x is equal to a0 plus a1 cos of x plus b1 sin of x plus a2 cos of 2x plus b2 sin of 2x and so on. Here we can see that a function f approximate with sums of sine and cosine functions. We can also write this expression in sigma notation, that is a0 plus sigma k goes from 1 to infinity ak cos of kx plus bk sin of kx, where a0, ak and bk are known as
कोफिशिएंट्स ऑफ सीरीज। अगर हमें किसी भी फंक्शन के कॉरेस्पॉन्ड ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ ए नॉट, ए के, बी के की वैल्यूज़ पता लग जाती हैं तो हम उस फंक्शन की फोरियर सीरीज़ इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू compute f1, we have to expand this series for k is equal to 1. Similarly, if we want to compute f2, we have to expand this series for k is equal to 2, and so on. Now let's move forward to study the formulas for these coefficients. The formula to compute a naught is equal to 1 over 2 pi integral 0 to 2 pi f of x dx. Similarly, we can compute ak using this formula, that is ak is equal to 1 over pi integral 0 to 2 pi f of x cos of kx dx, and bk is equal to 1 over pi integral 0 to 2 pi f of x sin of kx dx, where k is equal to 1, 2, 3 and so on. Here it is important to note that the only condition needed to find these coefficients is that the integrals above must exist. कि जिस फंक्शन की हम फोरियर सीरीज फाइंड कर रहे हैं वो फंक्शन 0 to 2 पाई में उसका जो इंटेग्रल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। Now let's solve an example of Fourier series. Find a Fourier series expansion of the following step function. F of x is equal to 1 if x lies between 0 and pi. Its value is 2 if x lies between pi and 2 pi. Here it is important to note that the second part of this function is not defined at x is equal to pi. So this function is not continuous at x is equal to pi. This function cannot be represented by Taylor series as discussed in earlier slides. Here is a graph of this function. From 0 to pi its value is 1, and from pi to 2 pi, pi is not included in the second part of this function, its value is 2. Now we will compute the coefficients of Fourier series. First of all, we compute a naught, that is 1 over 2 pi integral 0 to 2 pi f of x dx. अब हम इस इंटेग्रल को दो इंटेग्रल में ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से पाई इंटरवल में 1 है और पाई से 2 पाई इंटरवल में 2 है. So the value of a naught becomes 1 over 2 pi integral 0 to pi 1 dx plus integral pi to 2 pi 2 dx. The answer of first integral is x and the integration of the second integral is 2x. By applying the upper and lower limits and on simplifying, we get a naught is equal to 3 by 2.
Similarly, we can find the values of ak with the help of the formula, that is ak is equal to 1 over pi integral 0 to 2 pi f of x cos of kx dx। इसमें भी हम पीछे वाले की तरह इंटेग्रल 0 टू 2 पाई को दो इंटेग्रल में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 0 से पाई इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है और पाई टू 2 पाई इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है। सो द एक्सप्रेशन फॉर ए के विल बिकम 1 over pi into integral 0 to pi cos of kx dx plus integral pi to 2 pi 2 cos of kx dx। The integration of cos of kx dx is sin of kx over k plus the answer of the second integral is 2 sin of kx over k. The limit will remain the same. By applying upper and lower limits, the expression becomes 1 over pi into sin of k pi over k minus sin 0 over k plus 2 sin of k 2 pi over k minus 2 sin k pi over k। साइन की वैल्यूज 0 पर, पाई पर और 2 पाई पर 0 के इक्वल होती हैं। सो द होल एक्सप्रेशन equals to 0 for k greater equal to 1। So the values of a1, a2, a3 and so on equals to 0. Similarly, we can find the values of b1 using the formula, that is 1 over pi integral 0 to 2 pi f of x sin of kx dx। इसमें भी हम अपने इंटरवल को दो इंटरवल में ब्रेक करेंगे। 0 से पाई इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है और पाई से 2 पाई इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है। सो द एक्सप्रेशन फॉर बी के बिकम्स 1 over pi integral 0 to pi sin of kx dx plus integral pi to 2 pi 2 sin of kx dx। The integration of sin kx is minus cos of kx over k, and the integration of 2 sin of kx dx is minus 2 cos of kx over k. The upper and lower limit will remain the same. By applying upper and lower limits, the expression become 1 over pi into minus cos of k pi over k plus 1 over k plus minus 2 over k plus 2 cos of k pi over k. On simplifying, the value of bk is equal to cos of k pi minus 1 over k pi. We replace cos of k pi by minus 1 की पावर k। जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे, cos of pi is equal to minus 1। जब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, cos of 2 pi is equal to 1। जब k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, cos 3 pi is equal to minus 1। इसी तरह हमारे पास minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on आंसर आते जाएंगे। तो इसी वजह से हमने cos of k pi की जगह पे minus 1 की पावर k लिखा है। So the final value of bk is equal to minus 1 की पावर k minus 1 over k pi।
For different value of k, we can find the value of bk. So b1 is equal to minus 2 over pi, b2 is equal to 0, b3 is equal to minus 2 over 3 pi, b4 is equal to 0, b5 is equal to minus 2 over 5 pi, b6 is equal to 0, and so on. The value of b's with even subscripts equal to 0. By putting all the values of coefficients of Fourier series a0, ak, and bk, and on simplifying, we get the Fourier series of f as 3 by 2 minus 2 over pi into sine of x plus sine of 3x over 3 plus sine of 5x over 5, and so on. Here is a graph of Fourier series for f. The series we obtained represents the periodic function. अब ग्राफ में जो डॉट्स लगे हुए हैं ये फोरियर सीरीज के पॉइंट्स हैं, और जो सॉलिड लाइन है ये उस स्टेप फंक्शन का ग्राफ है जिसकी फोरियर सीरीज हमने फाइंड की है। 0 पर जो फोरियर सीरीज का पॉइंट है वो 3/2 के इक्वल है। 0 और पाई इंटरवल में भी फोरियर सीरीज का कोई ग्राफ बनेगा। पाई पर भी फोरियर सीरीज का पॉइंट 3/2 के इक्वल है। पाई और 2 पाई इंटरवल में भी फोरियर सीरीज का कोई ग्राफ बनेगा। एंड अगेन 2 पाई पर फोरियर सीरीज का पॉइंट 3/2 के इक्वल होगा। तो जो फोरियर सीरीज का ग्राफ 0 और 2 पाई इंटरवल में बनेगा वही 2 पाई से 4 पाई इंटरवल में बनेगा। Now let's see how can we find these points of Fourier series. Notice that at x is equal to pi, where the step function jumps from 1 to 2, all the sine terms disappear, leaving 3/2 as the value of the series. This is not the value of step function f at pi, since f of pi equals to 1. The Fourier series also sums to 3/2 at x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. In fact, all terms in the Fourier series are periodic of period 2 pi, and the value of the series at x plus 2 pi is the same as its value at x. This series represents the periodic function with domain the entire real line and a pattern that repeats over every interval of width 2 pi. The function jumps discontinuously at x is equal to n pi, where n is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on, and at these points has value 3/2. ये सारी वर्डिंग लिखी हुई है
जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फोरियर सीरीज आई थी वो पीरियोडिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। These are the graphs of Fourier series. For k is equal to 1, the graph of Fourier series is f1, that is 3 by 2 minus 2 over pi into sine of x. Similarly, for k is equal to 3, f3 is equal to 3 over 2 minus 2 over pi into sine of x plus sine of 3x over 3. For k is equal to 2 and 4, we get the same graphs as f1 and f3. These graphs represent the periodic behavior of Fourier series. 0 से 2 पाई इंटरवल में जो f1 और f3 के ग्राफ्स हैं वही 2 पाई से 4 पाई इंटरवल में होंगे because the period of the function is 2 pi. These are the practice questions. Find the Fourier series associated with the given functions. क्वेश्चन नंबर 1 में 0 से पाई इंटरवल में f of x की वैल्यू 1 है और पाई से 2 पाई इंटरवल में f of x की वैल्यू -1 के इक्वल है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में f of x की वैल्यू 0 से पाई इंटरवल में cos of x है और पाई से 2 पाई इंटरवल में 0 है। You can easily compute Fourier series for both questions. Thank you.